Welcome to the IVM Podcast Network. Hi, this is Amit Doshi, and I wanted to thank each and every one of our listeners. It's been 2 years since I founded IVM, and it's been an amazing 2 years. We wanted to learn a little bit more about who is listening to our shows, and so we put together a short survey. The survey is anonymous, and we aren't going to be collecting any personal information. I would really appreciate it if you could take a couple of minutes out of your day and go to ivmpodcast.com/survey and fill it out. Thanks, and please keep listening. You're listening to TFG Fantasy Cricket. Hey guys, welcome to a new episode of TFG Fantasy Cricket Podcast. After a long time, me and Vivek are back in the studio for the Dhamaka weekend. 4 matches, उसमें से 2 टेस्ट मैच, 2 वनडेज. हम आज एक वनडे एक टी20. एक T20, yeah. So in this episode, we'll be basically sticking on the test match, which is happening between India versus Australia, the decider. Yeah. And New Zealand versus That South is also Africa. a decider. That is also a decider. काफी changes हो सकते हैं, हो भी नहीं सकते. It's such a kind of a round. And we'll start off with India versus Australia. Yes. The big question जो कल शाम को news में आ गया कि Shreyas Iyer has been called As a replacement for, अब वो देखना पड़ेगा विराट कोहली खेलेगा कि नहीं खेलेगा. I have Vivek Krishnan with me. Vivek, your thoughts? My thoughts, बहुत बड़ा क्या बोलते पेचीदा मामला है कपिल देव के लैंग्वेज में. पेचीदा मामला. Yes. मैं बिल्कुल सहमत हूँ. So first thing, very happy to be back, like you said, after a long time. एक हफ्ते का ब्रेक भी काफी लंबा हो जाता है. But yes, everything, all the talk is about one man, विराट कोहली. क्या वो बल्लेबाजी करने उतरेगा, क्या वो कप्तानी करेगा, नहीं करेगा, फिट है. अभी मैंने एक ट्वीट पढ़ा था अबाउट विराट कोहली गेटिंग थ्रो डाउन्स एट धर्मशाला. तो इससे बहुत कुछ इंडिकेशन तो नहीं मिलता आपको, लेकिन व्हाट यू नो इज ठीक है, ये बंदा खेल सकता है. लाइक वी सॉ इन दैट फर्स्ट इनिंग्स इन रांची. क्या आपको लेना चाहिए विराट कोहली को? मेरा मानना यह है कि नहीं, फॉर 2 रीजंस. वन इज बहुत ही खराब फॉर्म चल रहा है एक तो, एंड ऑस्ट्रेलियंस को पता लग चुका है कि अब विराट कोहली को क्या किया जाना चाहिए जिनसे उनकी रन फ्लोइंग कम हो जाए. ठीक है. नंबर 2, इंजरी. अगर वो नहीं खेले तो आप क्या करोगे? आप 11 पॉइंट दोगे, आप लोगे, फिर आप हैंडीकैप जाओगे. और टेस्ट मैच में जैसे कि हमने देखा है, इफ यू प्ले हैंडीकैप ओवर अ पीरियड ऑफ 5 days, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू विन. So please don't pick Virat Kohli. So that is our answer. Whether he plays or not, don't pick him. You know, from cricketing point of view also, if he's injured, if he's not 100% fit, don't pick him. I agree. Yeah, I agree. I mean, इतना भी fantasy को छोड़ो. आप विराट कोहली as a batsman देखो. Even leave the captaincy aside. See the pressure he's going to be under. Enormous. Because win or lose, he's going to take all the bashing. ठीक है? तो इतना प्रेशर में, एंड ऑस्ट्रेलिया कोई कच्ची टीम नहीं है यार. अगर एंड समबडी हु स्कोर्ड, दिस इज द ओनली टाइम अ कैप्टन हैज डन इट. 4 सीरीज में डबल सेंचुरीज मार दिए बैक टू बैक, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 or 6 innings, if he has not been able to get even a single 50, it talks a lot about the Australian quality. Correct? Yes. So this is why don't take a chance. But also, he is not that kind of a character कि मैं 100% fit नहीं हूँ तो मैं थर्ड मैन पे जाके खड़ा रहूँ. बिल्कुल नहीं. No, he'll give 200% into whatever he has. Yeah, वो स्लिप में होगा, गली में होगा, मिड ऑफ में होगा. He'll be near the batsman's ears. He'll say something. So India needs Virat Kohli. There is no question about it. IPL needs Virat Kohli. Even yeah, I think IPL needs Virat Kohli. RCB needs Virat Kohli. So greatness aside, ये मैच के लिए आप विराट कोहली को पिक ना करो. हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो सेंचुरी नहीं मार सकता है. ही कैन डू इट. ही हैज ऑल द क्लास. डबल भी मार सकता है. बट इतना अगर फैक्टर्स आपके अगेंस्ट हो तो आई थिंक इट इज बेस्ट टू अवॉइड. Okay. Does the conditions of Dharamsala suit Australia a lot? Surely. And this is where, Nikhil, I have a problem with the BCCI scheduling. अगर आप जानते हो कि धर्मशाला, and for all the listeners, this is the debut match in Dharamshala. Yeah, debut test match, yes. So the conditions, like we heard from the pitch curator, the groundsman rather, is
is going to favor the seam bowlers. We saw how Cummins bowled in Ranchi. We saw how Hazelwood bowled in Bangalore. Itna purchase ke bina, if these guys can pick 4 or 5 wickets, imagine if there is grass on the wicket. They can run through India. The only wall currently in the Indian team is Pujara. Yes. He is that guy, rock solid, खेल रहा है, जिसको आपको फैंटेसी टीम में होना लेना भी चाहिए एंड कैप्टन भी बनाना चाहिए. हमने गलती करी पिछली बार. We had picked him, but we didn't make him a captain or vice captain. This time, he's our captain. Okay. Does that make you happy, Nikhil? Yeah, it does make me happy. But then I would ask you another question. This condition will also favor David Warner, who is looking for runs. Is in the team. Precisely why I have picked him. Yeah. Okay, तो मैं आपको ये बात बता दूं, अगर आप विराट कोहली नहीं लेते हो इस बार, तो you have that extra 1 or 2 credits available. And that's where David Warner fits in. David Warner ऐसा बंदा है, he also is going through a very low phase. We saw him struggling in Sri Lanka. Now he's struggling here in India. He has nothing to lose. The way he plays his game, he's going to go out, final test match. If he scores 100, I don't see Australia losing. Do you agree with me, Nikhil? Yeah. अगर वो एक ऐसा बंदा है जो एक सेशन में 80-90 मार देगा, आप बहुत पीछे हो जाओगे अगर आप उसे ना लो तो. वी गॉट मेनी पीपल राइटिंग टू अस आस्किंग व्हाई नो वार्नर एंड वी एक्सप्लेन सेइंग ऐसे पिचेस में वो काम नहीं आता. अब हमें लगता है कि जैसे निखिल ने कहा, ग्रास है, गति है, बाउंस है, जस्ट प्ले हिम. मैन 1 hour ऑफ डेविड वार्नर, पैसा वसूल. आपको आपके सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे एंड इफ पीपल इन योर लीग डोंट हैव हिम, you go straight away 40-50 points ahead. And 40-50 in a day is quite a lot. Yeah. So, we pick Warner, but we don't make him a captain or vice captain. He's just in our team. Yes. Okay. There were also news of Mohammad Shami coming in. Any changes in the bowling side? Mohammad Shami to nahi khel raha. Okay. Now, it's the BCCI has officially made a statement. He's been sent back to play the domestic cricket to assess his fitness. Our bowlers will be Umesh and Ishant, pace bowling. मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया शुड प्ले 1 more bowler. सीमर. बट कौन है? भुवनेश्वर. बट वी वोंट प्ले हिम. व्हाई? बिकॉज वी आर वेरी स्केर्ड अबाउट गेटिंग बोल्ड आउट एंड दैट्स वेयर आई फील Karun Nair will get the opportunity to play. So Karun Nair might slot in at number 6. Should you pick him? No. Terrible form, not having a clue about what he has to do against the Australians. So just leave him aside. The only guy whom you can pick is KL Rahul at the top, who has been getting 50 probably every innings. Yeah. So pick KL Rahul, pick Cheteshwar Pujara from India, and pick Riddhiman Saha, because Riddhiman Saha is doing better with the bat as compared to Matthew Wade. Okay. And जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये राउंड में आपको क्रेडिट्स मिल सकते हैं, आप अगर कोहली ना लो तो इस्तेमाल कर लो. Okay, so it all revolves around not picking Kohli. Certainly. Is our team ready? Yes, it is ready. As you rightly said, it revolves around not picking Kohli. So I start with the keeper, that is Riddhiman Saha. Batsmen in KL Rahul, David Warner, Matt Renshaw has done very well for them. वो 50-60 मारता है लेकिन बहुत यूजफुल है भाई. There is Steven Smith, obviously, who also happens to be our vice captain. Surprised? No, not at all. थैंक यू. या क्योंकि मैंने सोचा, देखो अश्विन भी है एक तरफ, जडेजा भी है, दोनों देखो फिरकी आप लगाओ, लेकिन कितना लगाओगे यार. और दोनों बैटिंग भी नहीं कर रहे हैं. जैसे कि हमने देखा, दे डिड वेरी वेल अगेंस्ट इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश, बट नॉट सो मच अगेंस्ट द ऑस्ट्रेलियंस. बॉलिंग में आई हैव अ फीलिंग, निखिल, दैट जडेजा इज डूइंग बेटर देन अश्विन. ऐसा लगता है मुझे. अगर विकेट में कोई परचेस ना हो, टर्न नहीं हो, असिस्टेंस नहीं हो, तो आप देख रहे हो कि इट डजंट मैटर फॉर जडेजा, बट इट मैटर्स टू अश्विन. वी पिक बोथ ऑफ देम बिकॉज वी फील इफ इंडिया हैज टू विन, they have to pick wickets. You will not see Ishant or company picking wickets. So they are in our team as all-rounders. You talk about bowling, we have Umesh Yadav, जिसने न्यू बॉल से नहीं, ओल्ड बॉल से बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया. निखिल, मुझे ऐसा लगता है कि he has been our pick of the fast bowlers. Yes, obviously. And 2 in Pat Cummins and Nathan Lyon. Now the interesting question is, I read an article about Josh Hazelwood probably being replaced by Jackson Bird. That's why I'm not picking Hazelwood here. So it is better to play safe
and safe means I But pick any Nathan Lyon. reason? Injury concerns? Injury concerns, in fact, Cummins का report आया था. One of the Australian papers reported saying he's got a strain, but he has been cleared. This is what I read on Twitter just before we started recording. So if he's cleared, he will take the new ball. Hazelwood should play, in my opinion, but you never know with bizarre selection policies. So we leave him the way he is and we pick Nathan Lyon. Okay. What if, you know, अभी still 24 hours है मैच चालू होने के लिए almost. बिल्कुल. You get to know that Virat Kohli is playing for sure. मैं नहीं लूंगा यार, जैसे मैंने बताया. देखो बहुत सारे अनसर्टेनिटीज है और अगर मैं उसे लेता हूं तो मुझे वार्नर को ओमिट करना पड़ेगा, साहा को ओमिट करना पड़ेगा. आई विल गो विथ गट फीलिंग दिस टाइम एंड if the wicket is anywhere close to what we have been reading, watch out for David Warner. Okay. Last innings, koi fikar nahi, but straight away he goes to Hyderabad now to lead the Sunrisers. He won't care, man. Even a 50, 60, 100 छोड़ो, 50-60 भी बहुत भारी पड़ता है. उसमें मैं आपको बताऊं बहुत सारे बाउंड्रीज भी आएंगे. आपको बाउंड्रीज के पॉइंट्स भी मिलते हैं. Makes a lot of difference. Okay. I just hope, you know, ये decider है. यार दिल हिंदुस्तानी है तो इंडिया विन करना ही चाहिए. इट्स गुड फॉर इंडिया, इट्स गुड फॉर आईपीएल बिकॉज ऑल द प्लेयर्स विल बी कमिंग आउट हैप्पी. अगर हम ये हार जाते हैं तो एक्चुअली अनथिंकेबल. हम ये नतीजे पर आके खड़े हैं. इस मुकाम actually. पर आना एक महीने पहले हम सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन इट इज व्हाट इट इज एंड वी हैव टू कोप अप विद इट. Okay. Let's move on to our next match. Again a decider. New Zealand versus South Africa. काफी सारे इसमें भी injury concerns थे. Quinton de Kock का problem था, but I think he has been cleared. Yes, he had a index finger injury. Again, I saw a tweet. It was nicely wrapped up, and he had keeping drills followed by batting drills. And their fitness doctor has said he's going to play. Okay, so it's official. Quinton de Kock will play. Should you pick him? Yes. Yes. ये मैं कह रहा हूँ इसलिए because you know in the last test match when I was playing a 5-man league, किसी के पास क्विंटन डिकॉक नहीं था और जब तक वो बैटिंग करने नहीं आया मैं लास्ट पोजीशन पे था. And no time, what, 91? 91 in no time. That is the kind of impact he has. He's that Gilchrist type of player who will come at 6 and 7, just go hammer and tongs. And एक सेशन में बाजी पलट जाएगी यार. तुम 0 से 1000 डायरेक्ट. So that's what Quinton de Kock does. And keeping के बारे में तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है. So you pick him. सऊदी बाहर है, ट्रेंट बोल्ट बाहर है. बॉलिंग कौन करेगा? तुम और मैं. न्यूजीलैंड इन बैड शेप फॉर दिस टेस्ट मैच. एंड मैं आपको बताऊं, द विकेट इन हैमिल्टन has generally been batting friendly. Okay. Expect, if the South Africans get in, expect 500 plus, man. Because if Wagner, Matt Henry, they have got Lockie Ferguson, who's nursing an injury. They have got one more rookie. Who is going to bowl? They are probably contemplating playing both Jeetan Patel and Santner. Colin de Grandhomme and Neesham could also play. So as you can see, it's a very, very ordinary attack. How many of them do you pick? I only pick Wagner. Okay, yeah. अभी आप, when we pick Saudi and Bolt, हम hesitation के साथ Wagner छोड़ते हैं. अब अगर वही उनका front line है, तो it makes sense to pick him. Yep. So you pick him. On the South African front, एक मैंने interesting choice किया है इस बार. I have picked Morne Morkel in place of Kagiso Rabada. Reason being, अब दोनों टेस्ट मैच देख लो, उसने बेहतर बॉलिंग किया है रबाडा से एंड विकेट्स भी ज्यादा लिया. सो आई पिक मॉर्ने मॉकल. फिलैंडर रिमेन्स द सेम इवन दो ही वेंट विकेटलेस. व्हेन वाज द लास्ट टाइम फिलैंडर वेंट विकेटलेस इन अ टेस्ट मैच? नेवर. या अच्छा चीज है ये. थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए. इट कैन हैपन. सो इट कैन हैपन. वो हमारा कैप्टन था, थोड़ा बहुत बैटिंग में कंट्रीब्यूशन किया था. बट दैट्स द क्वालिटी ऑफ फिलैंडर. ही कैन कम एट नंबर 7 एंड ही कैन बैट, मैन. सो वी पिक हिम इन द स्क्वाड. विकेट कीपर, लाइक आई सेड, क्विंटन डे कॉक. बैटिंग, देयर इज नो स्पेस फॉर हाशिम आमला. क्या करूं यार? यू मस्ट बी फीलिंग वेरी, आई डोंट नो, अनईजी विद इट, नॉट पिकिंग. दैट इज द वर्ड. So when I was looking at the scorecards on my way, and I said, थोड़ा मेरे को जम रहा नहीं है. It is that uneasy feeling, you know, because such a great player,
has not been contributing at all. And you never know, man. We leave him, he could clobber 100 like he did against Sri Lanka in that last test match. 160 mar diya and we were gone. So it could happen, but we are going with Faf 2. We are going with Dean Elgar, has been super. We are going with JP Dumini, not because he picks wickets, because he's going to bat at number 4. And Timba Bauma ke liye bhi jagah nahi hai, dost. Kya karu? Yeah. Yes. And Henry Nichols? Yeah. Okay. Yes. I wanted to pick him, but obviously I can't reveal certain reasons as to why we didn't pick him. But this test match ke liye, he's for sure a part of our team. Followed by Jeet Rawal, who has been जबरदस्त वैल्यू फॉर मनी बाय यार. 8 पॉइंट में तुम बताओ मेरे को, अगर कोई तुम्हें 60-70 रन देता है, नो कंप्लेंट्स, जस्ट टेक हिम. 8 पॉइंट में और एक प्लेयर है, प्लीज बताओ उसके बारे में. केशव महाराज. मैं जानता था तुम बोलोगे महाराज. फोर्स करके मुझे लेना पड़ रहा है ऑलराउंडर्स कैटेगरी में, बट लाइक यू सेड ही इज पिकिंग 3 विकेट्स, 4 विकेट्स, 6 विकेट्स. 6 विकेट्स. आई शुड बट आई टेल यू व्हाट, यू नो व्हेन समबडी पिक्स अ प्लेयर लाइक महाराज और बाकी के लोगों ने नहीं लिया, एंड इफ ही गोज ऑन टू यू नो पिक 3-4 इवन 3 विकेट्स, ही इज लाइक अगर किधर भी नीचे हो जाते हो. दैट्स आई कंप्लीटली एग्री. हालांकि सरप्राइज पैकेज है, आप कभी कभार एक्सपेक्ट नहीं करते हो ऐसा प्रदर्शन, लेकिन अगर किया है तो आपको लेना ही पड़ेगा आगे भी. सो वी पिक हिम. नीशम एंड कॉलिन डी ग्रैंडहोम के बीच में एक बड़ा टसल है यार. दोनों भी खेल सकते हैं, दोनों में से कोई एक भी खेल सकता है, दोनों बाहर भी जा सकते हैं. दिस इज न्यूजीलैंड माय फ्रेंड्स, प्लीज. उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सऊदी बोल्ट बाहर है तो लोग बोलेंगे अब तुम दोनों भी बाहर जाओ, एंड दे माइट प्ले 3 spinners. So what I heard was they're trying to bring in Sodhi to partner Patel and Santner. Can you imagine a New Zealand team playing 3 spinners against South Africa? Yeah, I can. After the World Cup match, anything is possible. Yes. So this is what they're capable of, and this is why we are here to caution you. हम आपको वार्न कर रहे हैं कि ये सब हो सकता है, पॉसिबिलिटीज दे रहे हैं. सो दिस इज आवर टीम. निखिल कैप्टन विल बी केन विलियमसन. Absolutely no hesitation. New Zealand's best batsman. Conditions will be batting friendly. He has to score runs. We pick him. Vice captain Faf du Plessis. बुरा चॉइस है? नहीं, ऑफ कोर्स बुरा. फाफ डू प्लेसी है आपके नजर में कोई 2-3 चॉइस? हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ. डिकॉक तो नहीं, क्योंकि उंगली में चोट है, तो मेरे को रिस्क नहीं लेना है. ओके. सो देन वी गो विद फाफ डू प्लेसिस. ओके गाइस, यू हर्ड इट देयर. इन फ्यू आवर्स बोथ कॉलम्स शुड बी रेडी. ऑल्सो प्लीज मेक अ नोट, धर्मशाला में वेदर का कोई पंगा नहीं है, लेकिन लाइक वी सेड पिछले टेस्ट मैच में भी वेदर प्रॉब्लम हुआ था न्यूजीलैंड में, इस बार भी हो सकता है. बी वेरी वेरी केयरफुल. सिचुएशन ऐसा आ सकता है लाइक वी एनकाउंटर्ड इन गेम 1. सेकेंड इनिंग्स हमको मिला ही नहीं और हम हार गए. सो ऐसा हो सकता है. Please be careful while picking teams. Okay. Guys, you can log on to our website, thefangarage.com, where you will find all the fantasy cricket articles. You can connect us on Twitter at TFG Fantasy 11 and on Facebook at Fantasy Pandit. You can connect with Vivek Krishnan at Krishnan Viv 27. Krishnan Viv 27, okay. Yes. Okay. It was always 27. Okay. And on me on Twitter as at 42 Nikhil. You can listen to our podcast on Indusworks Media, Audioboom, SoundCloud, iTunes, and definitely on YouTube. Subscribe, share, like, and comment. Also, remember, हम लोग TFG Cricket Podcast भी करते हैं, where we are previewing each and every IPL team, so that you get, you know, hang of ये build up है, ये knowledge चाहिए to get into, you know, fantasy cricket of IPL. Foreign assets हो, hidden gems हो, टीम टू टीम हम प्रीव्यू कर रहे हैं. यस. और हमारे वेबसाइट पे सारे आर्टिकल्स अवेलेबल है. डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड दिस ऐप IVM पॉडकास्ट ऑन एंड्रॉइड एंड iOS. टिल देन, टेक केयर. बाय. Hey man, just help me out, man. I need some podcast, man. I haven't had a fix in a week. Just need some. Don't you worry about it. I got podcasts galore for you, man. Just go to ivmpodcast.com. You can also find us on Facebook, Twitter, and Instagram. Thanks, man. I'm gonna check it out.